So the first thing we'll discuss is equation of a plane. Okay, equation of a plane is normal form is r dot n is equal to p. Okay, so there is a plane, three axes हैं. There is a plane, ठीक है, which you know the normal form, okay, normal vector of the plane, and you also know the perpendicular distance of the plane from the origin. Okay, this distance p. Okay, interestingly, if you know the perpendicular distance, then this vector from O to the OD, right, its vector is also will be OD will be P into n cap. Why? Because whenever you are finding a distance from something, that line is always perpendicular to that thing. For example, if you want to find distance of this point, कौन है ये टेक्स्ट कर रहा है, कौन कर रहा है व्हाट्सएप पे टेक्स्ट, ये सेक्शन कर रहा है, वेरी गुड. See, so suppose this point P, और मैं इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस चाहिए मुझे लाइन L से, तो I have to drop a perpendicular like this, right? So PM must be perpendicular to the line. Similarly, if there is a plane and there is a point P and you want to find the Anika video on, and if you want to find the perpendicular distance from P to this plane, plane को pi से denote करता हूँ मैं, pi. So this you have this line, this PM should be perpendicular to the plane. Okay, fine. So concept है कि perpendicular drop करना है, तो perpendicular will be sorry, the shortest distance is always perpendicular to the line or plane. So if this is a plane and this plane is pi, okay, it is at a distance of some distance. Suppose the distance is d from the origin. Okay, from the origin, then this point where it hits, okay, the the perpendicular hits the plane is m. OM vector will be p, will be d into n cap, right? OM vector will be d into n cap. Now you take any vector on this plane, r bar, okay, you will get that r bar is any vector, right? Any vector. You'll get r. What? See, so this is r vector, this is d n k vector, right? ध्यान से फिर से देखो, ये तुम्हारा एक्सिस है, एक्सिस ओरिजिन है, दिस इज योर प्लेन, ठीक, इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, सो दिस वेक्टर OM is dn vector, dn cap. Okay, Ansh video on. And this is r vector, which is anywhere on the plane. Then see, this vector is OM vector, this vector is OP vector, and this vector is some MP vector, right? MP. So you have OM plus MP is equal to OP. ठीक है, OM plus MP is equal to OP. Therefore MP vector कितना है? MP vector is OP minus OM, which is equal to R vector minus DN vector, right? DN cap. Now this MP vector, if it lies in the plane, MP lies in the plane, wherever P is, MP lies on plane, right? Therefore MP must be perpendicular to OM, right? Because OM is a vector perpendicular to the plane. Therefore R minus DN cap dot, right, dot. अब you can write OM as, see, OM डायरेक्शन डॉट है ना, तो तुम इसको OM को यहाँ पे DN भी लिख सकते हो, DN कैप भी लिख सकते हो, और यू कैन जस्ट राइट द डायरेक्शन ऑफ OM विच इज N कैप, तुम दोनों लिख सकते हो, ठीक है. अगर ये लिख देते हो तो देखो क्या आएगा, R डॉट N कैप माइनस D N कैप डॉट N कैप, N कैप डॉट में 1 होता है, इक्वल टू 0, सो यू हैव R N कैप, R डॉट N कैप इज इक्वल टू D, ठीक है. दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ, ये तुम्हारी बुक में दे रखी है. अगर तुम यहाँ पे, ये तुम्हारी बुक में दे रखी है R डॉट N कैप इज D, ओके.
अगर तुम इसकी जगह डी एन कैप डालते तो ये आता आर माइनस डी एन कैप डॉट डी एन कैप इज इक्वल टू जीरो, आर डॉट डी एन कैप माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. ओके, अगेन एंड यू कैन देन आर डॉट डी है ना, तो आर डॉट ये डी डिस्टेंस है ना, तो इट्स अ नंबर राइट, ये नंबर है तो यू अगेन यू कैन कैंसिल, इट्स अ नंबर राइट, सो यू कैन कैंसिल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ये है, अगर एक प्लेन का इक्वेशन है, सपोज आर को डालिए तुमने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, और एन इज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप इज इक्वल टू डी, then you see xl plus my plus nz is equal to d, ये आएगा. ठीक है, this is the Cartesian equation of plane. Fine. uh, Next thing, whenever you write r dot n cap equal to some number, that number is the distance of the plane, that plane from the origin. Okay. So for example, I go to exercise 5.5, go to exercise 5.5. Exam Guru book, page number 172 of PDF. Page 172 of PDF. See, you will see that. Read out the question, Akshat. Which question? The first one. I already did the first one. Yeah, find the equation of a plane at a distance 7 units from the origin when direction ratios of its normal to the plane are 3, minus 2, 6. Write the equation in Cartesian and vector form. Also find the foot of the perpendicular from origin to plane. So we know direction ratios, we will find direction cosines. Yes, very good. R dot direction cosine कितना है? Direction cosine, so 3 square plus 2 square plus 6 square का root is 7. So L is equal to 3 by 7, M is equal to minus 2 by 7, and N is equal to 6 by 7. तो ऐसे लिखेंगे is equal to 7. ठीक है? ठीक है everyone? What do you write? यही तो equation of plane है ना? अच्छा, that's the vector form. I wrote in Cartesian form first. Yeah, but either ways, yeah. ठीक है, और अगर Cartesian लिखोगे, you can even write it as R into 3i minus 2j plus 6k is equal to 49, right? नहीं 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 नहीं, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो. ऐसे क्यों नहीं लिखो? क्योंकि ऐसे याद रखो कि r डॉट n कैप d होता है, जब ये होता है तो ये राइट साइड जो होता है ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन होती है. ठीक है? ओके. इसीलिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखो, कभी इसको मल्टीप्लाई 7 7 से 49 मत करो, ऑल्दो इट्स टेम्पटिंग. ओके, ठीक है? तो कार्टेशियन में लिखना तो कर सकते हो, प्लस 6z इज इक्वल टू 49, कार्टेशियन में कर सकते हो, बट ऐसे करो मत. ठीक है? उसके बाद राइट वेक्टर हो गया. ऑल्सो फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है? यहां से लेके ये वाला वेक्टर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है ना, ये वेक्टर. तो ये वेक्टर क्या है? डी एन कैप है, डी एन कैप है. अब देखो यहाँ पे डी एन कैप डायरेक्टली दिखता है. डी कितना है इस क्वेश्चन में? 7 है. एन कैप कितना है? 3i माइनस 2j प्लस 6k बाई 7 है. तो डी एन कैप की वैल्यू कितनी है? 3i माइनस 2j प्लस 6k, यानी ये आपका वेक्टर है 0 0 0 से. तो देयरफॉर व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर? 3 माइनस 2 6. ठीक है? ओके. Anshu, understood this? So did you say something? I asked, did you understand this? No, sir. Can you explain like the last 2 steps once again? You understand this? Yeah, yeah. So r dot n cap is equal to d में r is your r vector, n cap is your unit vector, and d is the distance of the unit of the plane from the origin. If d is the distance of the plane from the origin and n cap is the unit vector perpendicular to plane, then this vector, the vector which is from origin to the perpendicular d, this is called dn cap vector, dn cap. Okay,
they're asking what is the foot of perpendicular. So this is 0 comma 0 comma 0. What is this point they're asking? What is this point? So Yeah. if this vector you know d n cap, which is d n cap वेक्टर देखो कितना है, d ये है, n cap ये है, तो d n cap आएगा ये. Oh, okay. अच्छा, इसके बाद find the equation of plane at a distance of 3 units from the origin. ठीक है, मतलब उसका राइट साइड 3 है and perpendicular to a line. अच्छा 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 अच्छा, perpendicular to a line this, right? तो मतलब वो प्लेन जो है, प्लेन के परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर है ऐसी, मतलब जो लाइन का एन, जो लाइन का डायरेक्ट डीसी है वही प्लेन का एन कैप है, राइट? डीसी ऑफ लाइन is equal to n cap of plane. Do you understand this, everyone? ठीक है, अब डीसी ऑफ लाइन क्या है? डीसी ऑफ लाइन है वन, डी आर है 1 to 2, तो डीसी क्या होगा? आई प्लस 2j प्लस 2k और डिवाइड बाई 2 2 4 4 4 8 9 3, ठीक? आर डॉट, ये देखो ये आ गया प्लेन का इक्वेशन. समझ में आ गया कि नहीं? Yes. तो हाँ, जो नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है उसमें ये होता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन का ये होता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे आ रहा है भाई उसी को खोल देना है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में. तो 3 3 9 नहीं करना है, क्या करना है? x/3 प्लस 2y/3 प्लस 2z/3 इज इक्वल टू 3. ये नॉर्मल फॉर्म है. कौन सी फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है. In the next question, they've asked to convert a Cartesian equation to normal form. हाँ, तो क्या करना है? बस राइट, दोनों साइड वो कर दो. By what? The direction ratio, like ABC. हाँ, 2 3 6 का 36 36 4 47 से डिवाइड करना है. 9 7 7. 11/7, ठीक है. ये है थर्ड का आंसर. तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन ऑफ फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगी? यही होगी 11/7, क्योंकि ये क्या लिखा है? r डॉट n कैप इज इक्वल टू d फॉर्म में लिखी है, ठीक है. लिखते जाना साइमल्टेनियसली, आज सारे करके देने. 5.5 5.6 5.7 5.8 and then It's only there till 5.8. मैं एक पेज 185 पे एक असाइनमेंट है छोटा सा, वो भी करना है, ठीक है. पेज 185 पे असाइनमेंट है, तो तुम्हारे टोटल 5 एक्सरसाइज हैं आज. ये आरुषि वीडियो ऑन कर अपना. ओके, 5.5 हो गया, 5.6 की बारी है, ठीक है. 5.6 टाइम चाहिए और लिखने के लिए कि मैं स्टार्ट करूं 5.6? सो इसमें ना फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इन द प्लेन बोला है. बहुत इजी है. लाइन को लैम्डा लिखो, लाइन को इक्वल टू लैम्डा करो, एक्स वाई जेड निकालो, लैम्डा टर्म्स में प्लेन में डाल दो, आ गया, ठीक है. फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन x plus 1/2 is equal to y plus 2/3 is equal to z plus 3/4 and the plane x plus y plus z is equal to 3. क्या करना है? लाइन में उठा के लैम्डा लिखना है, लाइन को उठा के लैम्डा करो, x की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा माइनस 1, y की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 2, z की वैल्यू आएगी 4 लैम्डा माइनस 3. ये तीनों उठा के x y z इसमें डाल दो, ठीक. डाल देंगे, क्या आएगा? 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 3. लैम्डा निकाल लो, 2 3 5 5 4 9 9 लैम्डा इज इक्वल टू 3 3 6 6 2 8 1 9
9, lambda is equal to 1. So if lambda is 1, what is the point of intersection? X is equal to 2 into 1 minus 1, 1 comma y is equal to 3, 1, z is equal to 1. So the point of intersection is 1 comma 1. जब कर लिया तो देख लो सही है कि नहीं. कैसे देखेंगे सही है कि नहीं? ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए. लाइन को भी करना चाहिए, प्लेन को भी करना चाहिए. प्लेन को कर रहा है क्या? 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3. हाँ कर रहा है. लाइन को कर रहा है क्या? 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1, 1 + 2/3 इज इक्वल टू 1, 1 + 3/4 इज इक्वल टू, यस ऑल आर इक्वल. लाइन को भी कर रहा है. अंडरस्टूड? When they ask to find equation of the line, should you do which one should you do? Lambda, I mean the Cartesian one or vector one? When you कोई भी. Although for this one, instead of doing this lambda, won't it be easier just using the formula they have given? क्या किया है उन्होंने? क्या फॉर्मूला दिया है? R dot n vector is equal to R1 dot n. R as in the variable vector into n vector is equal to R, the given point into n vector. पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम. I don't know how to कौन see सा it. फॉर्मूला कहाँ दिया है? It's written on the page above only. Vector form. If you see 6, page number 173, where it's written 6 point. पेज उसके 173. नीचे. पेज 173. पेज 173 पे मैं गया हूँ. ठीक है. Vector form लिखा है ना वहाँ. Below that 6 bolded में जो है highlighted, below that लिखा है vector form. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म लिखा है. So they're asking equation of the plane only in this question. कौन से क्वेश्चन में मैं कौन सा कर रहा हूँ? 5.6 first one ना. ओ मैंने शायद दूसरा कर दिया है क्या? नहीं मैं दूसरा कर दिया हूँ. अच्छा ओ वही मैं, गलत. that's what I was thinking. अच्छा मैं 5.7 का फर्स्ट वन कर दिया हूँ. ओके ओके 5.6 का फर्स्ट वन करता हूँ. रुको. 5.6 the foot of the perpendicular drawn from origin to a plane is 1 2 3. तो 1 2 3 है ना. origin से 1 2 3 है. तो what is d n vector? मतलब d कितना है? d कितना है बच्चे? What direction ratios are 1, 2 and 3? नहीं, d distance of the plane from the origin. You can do the dot of the direction ratios and the point. ठीक है तुम d बताओ ना कितना है. 14 आया मेरा. 14. रूट 14 नहीं है. नहीं, it's 14. रूट 14 है बच्चे. d distance of the plane from the origin is root 14. ये कितना डिस्टेंस है? बस देखो m पॉइंट है, परपेंडिकुलर मारा तुमने. 9 4 9 4 13 14. हाँ रूट 14 आएगा ना डिस्टेंस. ठीक है. और n कैप वेक्टर कितना? n कैप वेक्टर है i + 2j + 3k डिवाइड बाय रूट 14. ठीक है. तो आंसर कितना है? समझ में आया ना ये? क्योंकि ये जो यही जो वेक्टर है यही इसका वो है, नॉर्मल वेक्टर भी है और यही इसका परपेंडिकुलर वेक्टर भी है. सो r डॉट n कैप r डॉट i + 2j + 3k डिवाइड बाय रूट 14 इज इक्वल टू रूट 14. ठीक है. ये आ गया. हमेशा प्लेन ज्यादा फॉर्मूले मत याद करो. सिंपल r डॉट n कैप इज इक्वल टू d करो और सब कुछ निकालो. ठीक है. n और d निकाल दो बस. 3D में इतने फॉर्मूले, ज्यादा फॉर्मूले मत याद रखो. और सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट. चलो ये मुझे सहज बताओ सेकंड कैसे करेंगे. सेकंड ऐसे करते हैं. एक पॉइंट पे एक a वेक्टर है, एक कोई r वेक्टर है, r minus a dot n. हाँ, if there is a point on the plane then the vector equation is r minus a dot n cap is equal to 0, where a is a point on the plane and n cap is direction normal to plane, normal vector of the plane. Okay, चलो बोलो सहज.
I'm not sure how to do it. क्वेश्चन पढ़ो क्या है? Find the equation of a plane passing through a point 1, 2, 3 and perpendicular to a line whose direction ratios are 2, 3 and -4. क्या क्या दे रखा है? The point and the direction कौन सा ratio. पॉइंट? कौन सा पॉइंट? The fixed point. कहाँ पे है ये? Oh wait, no, it's not. क्या? कहाँ पे है ये पॉइंट? I didn't get what you mean. कहाँ पे हैं ये points? पॉइंट कहाँ है? प्लेन प्लेन में है कि प्लेन में नहीं है, कि प्लेन के ऊपर है, प्लेन के नीचे है? It's passing through the plane, so it should be inside the plane. हाँ, इट इज ऑन द प्लेन. तो व्हेनेवर डेरिवेशन देखो सर कैसे होता है. ये प्लेन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक पॉइंट है जो इस प्लेन पे है. सपोज दिस इज ए वेक्टर. ये ए वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा है. Now you want to find the vector equation of this plane, so you need to write all those vectors r, any r which is lying on this plane. You also have normal to this plane. Direction अगर normal vector दे रखा है, normal ये होता है normal. या कोई भी कहीं भी किसी भी पॉइंट से नॉर्मल पास होता है, नॉर्मल सेम है सब. ठीक है. तो क्या दे रखा है? दो चीज दे रखी है, ए और एन, ए वेक्टर और एन कैप. देन यू ऑब्जर्व दिस कि अगर मैं r माइनस ए बनाऊं, r माइनस ए, r भी प्लेन पे है, a भी प्लेन पे है, तो r minus a will be like this. It is vector lying on the plane. R minus a is a vector, is a vector lying on the plane. ठीक है. So लिख रहे हो तुम कि नहीं? R minus a is a vector lying on the plane. If it is a vector lying on the plane, then any vector lying on the plane is perpendicular to n cap, of course. ठीक है. It is perpendicular to that n cap. So therefore r minus a dot n cap is equal to 0. तो सहज इसमें एक जल्दी लिखो और फिर क्वेश्चन का आंसर करो. हाँ. What is a bar? सहज, a vector. I plus 2j plus 3k. और what is n cap? 2, 3, -4. n cap क्या होता है? Wait, 2 square plus 3 square plus 4 square. नहीं, दोनों को मिला के. हाँ, वही मतलब दोनों को मिला के. क्या दोनों को मिला के? बोलो n cap, बोलो ठीक से ढंग से, पूरा n cap बोलो. 2y plus 3j minus 4k upon root of 2y, sorry, 2 square plus 3 square plus bracket में -4 square. इसका आंसर होगा r माइनस i प्लस 2j प्लस 3k, और इसका डॉट लेंगे किससे? 2i प्लस 3j माइनस 4k डिवाइड बाय रूट 29. 16 9 25, हाँ, रूट 29 इज इक्वल टू 0. अगर तुम इसको खोल देते हो कार्टेशियन, तो देखो ये x है, x माइनस 1 बनेगा, डॉट 2/29, तो 2/√29 प्लस y माइनस 2 बनेगा, 3/√29 प्लस z माइनस 3 बनेगा इंटू -4/√29 इज इक्वल टू 0. √29 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो जाएगा. यू विल गेट 2x माइनस 1 प्लस 3 ऑफ y माइनस 2 माइनस 4 ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये प्लेन का इक्वेशन है. We want to write it in that r dot n is equal to d form, then what do we do? अगर r डॉट n डॉट d चाहिए, Is equal to d, no, not dot d. हाँ हाँ, तो देखो इसको कि मतलब अगर मैं पूछूं कि इस प्लेन का, ऐसे क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, अगर इस प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है, राइट? तो r डॉट n कैप इक्वल टू d में लिखना पड़ेगा. r डॉट n कैप इक्वल टू d मतलब r
डॉट, ये जो इसके साथ जो डॉट है वो एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, और जो बाकी बचा है राइट साइड में वो राइट साइड में फेंक दो। तो देखो कैसे, देखो ध्यान से देखना क्या होगा। अगर मैं इसको खोल दूं तो क्या आएगा, आर, पहले इससे डॉट होगा ये, आर डॉट Oh, वाई yeah. टीजे माइनस 4k बाई रूट 29, और फिर जब ये दो डॉट होंगे ना, माइनस ये डॉट होंगे तो एक नंबर आएगा, नंबर है क्या, नंबर आएगा, वो D होगा. तो डी ही होगा ना, वेरी गुड, वो डी होगा। So वन that's इन, this. Well, this is the same thing I said for last question. It'll be R vector into n vector is equal to the given point into n vector. ठीक है, बट उसको ऐसे अलग से याद मत रखो, Okay, fine. ठीक है। 1 into 2 plus 2 into 3 6, sorry 1 into 2 plus 6 8, 8 plus 3 into minus 4 कितना हो गया, 3 into minus 4 कितना होगा, minus 12 होता है क्या, 8 into minus, sorry यार, 1 minus 12, 1 into 2 is 2, 2 into 3 is 6, and 3 minus 4 is 12, तो 8 minus 12 is minus 4। अब देखो इसमें ना माइनस ऑफ माइनस 4 आ गया ना बाई रूट 29, राइट। देखो ध्यान से देखना इधर, आर डॉट ये किया इज इक्वल टू माइनस 4 बाई रूट 29 आया ना, लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में जो नंबर है ना वो माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस कौन ले लेगा फिर, माइनस राइट लेफ्ट, माइनस इधर खिसका दो, ये माइनस को इधर खिसका दो, तो आंसर आएगा आर डॉट माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k बाई रूट 29 इज इक्वल टू 4 बाई रूट 29। So this is your Shouldn't it be positive anyways? I don't know how you got negative. what should be, what is it? It'll be negative of 2 plus 6 minus 12 by root 29. अरे सही किया है मैंने, तुम अपना चेक करो, ध्यान से ठीक से लिखो, तुमको दिखेगा तुमने गलत किया है, राइट साइड में लेके जाओगे वो माइनस ही रहेगा, आर माइनस ए है ना। Achha, right. Sorry, the plus sign gets cancelled because you took it the other हाँ, side. तो इसीलिए राइट साइड का जो नंबर है वो दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशन, जब आर डॉट एन इक्वल टू डी लिखते हो दो ही कंडीशन है, ये चीज एक यूनिट वेक्टर होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए यूनिट वेक्टर, और ये चीज एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए डी। अब इसको तुमको अरेंज करके यू हैव टू मैनिपुलेट, ओके। By the way, when they ask us to find an equation, they haven't specified. So which equation should we find? Any? I think the best is this one, The okay, Cartesian one. the Cartesian one, always safe, play So safe, the Cartesian one ka, so there's a shortcut for that also. You don't even need to do it in vector form. शॉर्टकट याद रखोगे तो फॉर्मूले बढ़ेंगे याद रखने के लिए। No, तुम but एक that's a काम करो, very simple one. Huh? लिसन बेटर मेथड ये है कि आप इसको देखो, इस आपने ग्रीन वाले को सॉल्व किया, ब्लैक बॉक्स आ गया ना, Yeah. ग्रीन वाले को सॉल्व किया, ब्लैक बॉक्स आ गया, अब जाके तुम थ्योरी में देखो, अब तुम फॉर्मूला देखो ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई, तब तुमको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला क्यों है ये, ठीक है। तो पर से फॉर्मूला मत देखो, सबसे पहले पहले वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करो, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करने के बाद ग्रीन से ब्लैक बॉक्स पे आ जाओ। अब तुमको लग रहा है कि जाके फॉर्मूला देख लो एक बार, फॉर्मूला अब याद हो जाएगा, अब बेटर याद हो जाएगा और भूलोगे भी नहीं, मतलब कि फॉर्मूला ये क्यों था, वो ए एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो हमेशा ऐसे काम करो कि वेक्टर से ही सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, फिर ऐसे देखने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला देख लो, तो तुमको दिख जाएगा कि फॉर्मूला का वर्किंग ही समझ में आ जाएगा कि क्यों ये है फॉर्मूला, वो इम्प्रिंट हो जाएगा दिमाग में। इसलिए मैं मना करता हूँ, मत देखो फॉर्मूले 3D के। 10 सम करोगे ना तुम अपने आप ही डायरेक्ट बोलने लगोगे ए एक्स माइनस एक्स वन, मतलब बिना किसी फॉर्मूला को रटे हुए अपने आप तुम्हारे मन से आएगी आवाज, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन। Next, third, how to do this, Ansh, what do you think? Yes, sir. 1 second. So if they're given 2 points, one lies in the plane, we can just find A through that, right? And then थर्ड go क्वेश्चन पढ़ो क्या है मुझे। find the equation of a plane, which is the right bisector of a line segment joining points A, which is 1, 3, 5, and B, which is 5, 7, 1. So ठीक है, give me your idea.
I think this is What? a vector, like b minus a can be an a vector, right? Okay. And then we have to find r, and then we can find n cap through the way that we find n cap, and then just equate it like question mark, like the previous question. Acha, what is the thing about the plane? Which plane do they need? The plane which has a right bisector to this line segment. Matlab, it is normal to this line, It is right? normal to the, and passing through which point? They haven't mentioned that. They have indirectly. Sorry? Bisector word, hai na? They Oh, have. sorry. Yeah. So it should be the midpoint. Yeah. Okay, what is the midpoint? Midpoint's gonna be 3, comma 5, comma 3. Hmm. And what is the n cap of the? So this is a point on the plane. Yeah. What is n cap of the plane? N cap of the plane would be 25 plus 9 plus 9 by 3, whatever. 25 plus 9 by what? Why? No, sorry, n cap of the plane should be the root of that thing, like 3 I cap by the root of 5 square plus 3 square plus 3 square. पहले तो बताओ ये वेक्टर कितना है? This vector is 4 comma 4i plus 4j plus minus 4k. So you know what? This is the I cap of this is 4i plus 4j minus 4k divide by Yeah. Divide this is by under root of. हाँ, So 1 second. जब ऐसा n कैप हो ना 4i plus 4j minus 4k पहले ही 4 हटा दो सबसे जगह 4 कॉमन ले लो Yes, that's right. ठीक है So we can just say root 3, no? yes I plus j plus minus root k by 3 By root 3. ये n कैप है अब डाल दो r bar minus a dot n cap is equal to 0 तो आएगा r minus 3i plus 5j plus 3k dot n cap is I plus j minus k by root 3 is equal to 0 इसको खोल के सॉल्व कर लो अपने आप ठीक है सब में मुझे आंसर तुम कार्टेशियन में ही देना ठीक है मानसवी Yes, sir. फोर्थ Yes, sir. Answers in Cartesian for all of them, not this हाँ vector. सारे में कार्टेशियन में लेना Okay, I'll do from now. Yes, sir. So I started by first finding out the direction ratios. So for this question, so the direction ratios that I got were A is equal to 3, B is equal to -3, and C is equal to 3. So then I went to find out the point which divides the line, not line, I think it's, yeah, which divides the plane in the ratio 2:1. So, so basically I got X's value as 4, point please, X's value as 4, Y's value as 3, and Z's value as 5. So मैंने बस अभी तक इतना ही किया है. I had to complete the question. I have to put it in the equation. और n कैप कितना है इसका बताओ अभी बताओ So one second.
Yes. Manasvi. So which equation do we need to find? They haven't like mentioned Which like the equation? card. क्या फिर से क्वेश्चन पूरा रिपीट करो. So they said find the equation of a plane passing through point C and perpendicular to the line segment AB. So which equation is that? I forgot. Like, is it the is it the Cartesian form that we need to find out? Like तीन x बताओ. minus पहले n कैप बताओ क्या है. n कैप तो चाहिए ना निकालने के लिए. n कैप बताओ क्या है. yeah, a unit vector perpendicular to the plane. So that should be क्वेश्चन में लिखा तो है लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू प्लेन. yeah. तो लाइन Oh, AB okay, इज इन. okay. Yes, sir. So is it like 3 I cap minus 3 I cap plus 3 I cap k cap 3 I cap minus 3 J cap plus 3 K cap. Yes. ये यूनिट वेक्टर है. हाँ. ये यूनिट वेक्टर है. I think इसकी वैल्यू से डिवाइड करना है like under root 3 square plus 3 square plus 3 square. कितना होगा. Under root 27. इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा I plus J plus K n by root 3. Okay. So what is the equation? वेक्टर फॉर्म में. तुमसे ही क्वेश्चन. R dot yes sir. R dot n is equal to P. So so तुम we'll पिछले just 3 क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जिसमें एक yes पॉइंट दे sir. रखा है और n कैप दे रखा है. अभी भी तुम बोल रहे हो r डॉट n इज इक्वल टू p. So Point on so the I'm plane, just n cap to the plane, and r minus a dot n cap is equal to 0. Tell me the next one, Manas. We find fifth. so can you just explain this part to me? So what will be A over here? Will A be the ये पॉइंट है जो प्लेन पे है, तो ये a वेक्टर है. डॉट n cap is I minus j plus k by root 3 is equal to 0. okay. So the fifth one also have to do. Yes sir. So, so Z will be equal to 0 for XY plane. So ठीक है. is it R minus 0 dot product with Z vector would be 0 equal to 0. Dot k cap, yes. Yeah, okay. Sorry. Dot K cap would be equal to 0. Then YZ plane would be equal to R vector minus 0. Dot product with I cap would be 0. And for the third one would be R vector minus 0.
dot product with j cap would be 0. Arushi, sixth one. Yes, so basically dr would be equal to 1 comma 1 comma 1 because they make equal angles with the axis, and the fixed point is 2 comma minus 1 comma 3. So the unit vector will be I cap plus j cap plus k cap divided by root 3. Then the equation will become r minus of 2i minus j cap plus k cap into I cap dot product of Dot, yeah. I plus j plus k divided by root 3 equal to 0. सही है, सही है. Rupak seventh. No, don't explain seventh. No, don't explain seventh. Explain eighth. Okay. After give 1 minute and then explain eighth. 1 minute after 1 minute. Yes. Eighth. Okay. Find the equation passing of the plane passing to the point A, 3, minus 3, 1, and perpendicular to the point P, 3, 4, 1. Okay, so it's gonna be joining the point which is midpoint of P and Q. Midpoint of P and Q is 2, 3. क्यों लिखा है midpoint? क्यों चाहिए midpoint? Bisector बोला है क्या? Set foot of the perpendicular. कहाँ कौन सा क्वेश्चन पढ़ दूंगा? 8th पढ़ रहे हो ना? Yeah. कहाँ है foot of the perpendicular? अरे पहले वो. Also find the coordinates. Why are you finding the midpoint of P and Q? Perpendicular bisector बोला है कि सिर्फ perpendicular बोला है? Perpendicular. So it is not bisector. You don't need to find the midpoint. It is, in fact, it is not passing to the midpoint. It is passing to the point A. You get the direction from PQ and then it passes through A. The direction from PQ. What? I can't hear what you're saying. You take the direction from the PQ points. Yeah. And you get my 1, 5, and minus 6. Okay. So then you find the unit vector. Yeah. 3 minus 3. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है? परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा है. Yes. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो अलग से एक पॉइंट और नहीं देंगे ना, एक्स्ट्रा पॉइंट. ए जो ऑलरेडी दे रखा है. Yeah. Okay. So then you take the point 3i minus 3j from 1 by root of 19. Yes. Equation of the perpendicular line. Okay. ठीक है. Rupak. Yes. There is a PDF I'm uploading in the. You will find it there in by 2nd April May, the spreadsheet. Okay.
It is under the section competitive, okay, and you have to finish this PDF exercise 1 to 3. Fine. Vectors wala. Yes, Exercise sir. 1 to 3 means till page 9, okay, till page 9. Fine. Yes, sir. And do it today only. Yeah. Okay. Well, कर लिया बिल्कुल मैथ्स लिया। ओके नेक्स्ट ये हो गया एक्सरसाइज अपने आप कर लेना बाकी जो नहीं डिस्कस किया एक ही क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है कर लेना एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.7 5.7 इजी है ऑल द क्वेश्चंस आर इजी डू देम ऑन योर ओन ठीक है फॉर एग्जांपल इफ यू सी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया था सिंपली टेक द पॉइंट ऑन द लाइन पुट इट इन द प्लेन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में सेम करना है find a random point on the line which is 1 plus 2 lambda 2 plus lambda 3 plus 3 lambda put it in the plane ठीक है सेकेंड थर्ड में सेम ठीक है लाइन का इक्वेशन निकालो प्लेन में डाल दो फोर्थ सेम सारा इसमें ना तुम मुझे अभी बस थर्ड और सेकंड मुझे अभी फोटो कर खींच के भेजो अभी राइट नाउ और होमवर्क में सारे कर लेना बट अभी सेकंड और थर्ड के बस फोटो खींच के भेजो 5.7 के
So, hello. Yes. In this eighth one, they're asking us to find. I found the foot of the perpendicular, and they're asking the distance from the perpendicular. But for that, I'll have to square 45 square and 54 एक minute. square. Question number Eighth in 5.6 only. 5.6 में question number 8. हाँ, तो Finding. yeah. हाँ. Plane का equation n cap कितना है? N cap मेरा आया था -I -5j plus 6k by root 62. By root 62. Sir, I know how to find it. I'm asking, but to find it, I have to square 45 and 54. एक मिनट तुम्हारा आई कैप इतना गंदा सा क्यों है? मतलब नीचे रूट के वो रूट किस चीज का है? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव आया तो I took negative sign this side. That's why. नीचे रूट में क्या है? 62. 62 कैसे आ गया? आया है अब DCs जब करा तो यही आया 1 plus 5 square plus 6 square. 1 plus 5 25 और 36 और 25 61 plus 36 और 26 हाँ 62 आया 36 और 26 62 हाँ सही है 62 root 62 आ गया तुम्हारा. I know I found the foot of the perpendicular, but now to find distance, I know how to find distance. The problem is I have to square numbers like 54 and 45. Not bad 54 और 45 अगर तुमको करना पड़ रहा है तो 9 उसमें कॉमन है ना. Oh yeah. फिर भी I don't 45 into 45 plus 54 into 54 by 31 square. If they ask us to convert Cartesian equation into vector equation, do we have to worry whether r dot is a unit vector or can we just put it directly? Akshat, can you repeat your question? Yeah, so in these questions, they're saying convert Cartesian equations into vector equations. Pretty simple. My only question is, do we have to ensure it's r dot n vector, or can we just put any vector? Because in the in the book, they've put any vector like. Cartesian equation को उठा के exact same कर दिया. They didn't find the direction cosines, didn't make it unit vector, nothing. जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन उसमें तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में आता है. 8th मैंने खत्म कर दिया. This is the next topic. नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट उस पे आ रहे हो तुम 5.7. जैसे 7th वाला पढ़ो, the stuff they've written in the book only. Example 1, they have directly put it. They haven't worried about making it a unit vector or not. किसमें एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल? हाँ, first example only. Equation of the plane in vector form. हाँ, ये वेक्टर फॉर्म सही है. So only if they say normal form, you have to worry about the unit vector and the distance, signs and stuff. हाँ, बट ऐसे करो तुम बस एक ही याद रखो, एक ही तुमको वेक्टर फॉर्म आती है प्लेन की, r डॉट n इक्वल टू t. बस समझ में आया? Okay. हाँ ठीक है, तुम इसको लिख सकते हो. ये आंसर इज फाइन ऐसे वेक्टर फॉर्म में. जितना कम याद रखोगे ना उतना सिंपल रहेगी लाइफ, इसलिए बोल रहा हूँ.
You have to only right now do 2 and 3 of 5.7 and send it to me photograph so that we can go to the next exercise, which is important. This is इसमें कुछ नहीं है इस exercise में.
Rupak. Rupak, Yes. So yes. So check your second answer. Ansh, you also check your answer. Your third answer. Ansh, you check your third answer. Rupak, you check your second answer. अंश अंश रूपक चार बच्चों ने भेज दिया। अक्षत एंड मानसवी सेंड अक्षत एंड मानसवी and Sahaj What do you want to send? second and third. Wait, I did it. Can I just send all of them together like yesterday? Yeah. Manasvi, Yes, I'm sending it. okay, videos on everyone. If there is a plane like this, okay, and there is a point, okay, then this point P, if you drop a perpendicular from P to the plane, okay, this is foot of perpendicular PM, M is foot of perpendicular. If you know the normal vector of the plane, right, then you can find MP vector. MP vector is just the length of MP vector, mod of MP vector into n cap. The length of MP vector is also called distance of the point from the plane. And this distance of P from plane. Okay. Suppose you want to find the you can also write the line MP vector, the line MP, okay, is r bar is equal to P vector plus PM vector or MP vector, okay, lambda times of PM vector, okay. So and this can be used to this line, you can find the intersection of this line and this plane to find the point M. देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है, फाइंड 5.8 में find the length and foot of the perpendicular from 7, 14, 5 to the plane एक मिनट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, to the plane, the plane is 2x plus 4y minus z equal to 2, ठीक है। तो क्या होता है, what is the distance of a point from a plane, पहले तो distance निकाल सकते हैं easily. The PM distance is
just put the point in the plane, right? 2x plus 4y, जो भी equation है 4y minus z, and then divide by under root of a square plus b square plus c square. So 2, the PM distance is 2, x की वैल्यू 7 plus 4, 7 मतलब ये पॉइंट डालना है इसमें, plus 4 14 minus z 5 minus 2 का mod divided by under root of a square plus b square. ये क्या है 2 4 और -1 इसका जो dr से प्लेन के, ठीक है, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, ये पीएम डिस्टेंस है. अब देख कितनी आती है 14, 2 7 14 minus 4 into 14, so 1 into 14 minus 4 into 14 is minus 3 into 14, minus 3 into 14 is 14 28 42 minus 42, ये ऊपर minus 42 और minus 7, तो minus 49 है ऊपर, जो मॉड होके प्लस हो जाएगा प्लस 49 डिवाइड बाई 16 20 16 4 20 और 21 220. दिस इज योर पीएम डिस्टेंस. ठीक है, ये पीएम डिस्टेंस आ गई. ओके, एक मिनट, ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑफ द पीएम. ये रूट 189 क्यों ले रखी है ना? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज देखो अब ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं. ठीक है, जो पीएम लाइन, ये जो पूरी लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो. क्या लाइन की इक्वेशन है? देयर इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड देयर इज अ, ये सर देखो ये इसके डीसी डीआर है लाइन के. सो x minus 7/2 is equal to y minus 14/4 is equal to z minus 5/-1. अंडरस्टूड? ये लाइन की इक्वेशन आ गई. इज इक्वल टू लैम्डा है, इज इक्वल टू लैम्डा है, तो x की वैल्यू कितनी हुई 2 लैम्डा प्लस 7, y की वैल्यू हुई 4 लैम्डा प्लस 14 और z की वैल्यू हुई माइनस लैम्डा प्लस 5. ठीक, ये उठा के प्लेन में डाल दो. प्लेन की इक्वेशन ये है ना, 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू 2. इसमें x डालेंगे, इसकी जगह y की जगह डालेंगे, z की जगह ये डालेंगे और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो ये डालेंगे तो आंसर आएगा, डाल लो आंसर आएगा लैम्डा इज इक्वल टू -3. लैम्डा -3 है तो पॉइंट क्या है? ये तीनों पॉइंट है. x इज इक्वल टू -3 1, y इज इक्वल टू 2 and z is equal to 8. So this point is 1, 2, 8. ये पॉइंट आ गया 1, 2, 8. एक्चुअली डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, 1, 2, 8 आ गया. फिर पूछ रहा है लेंथ ऑफ द लेंथ कितना है? ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया. फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालो. 7 minus 1 6 स्क्वायर प्लस 14 minus 2 is 12 स्क्वायर प्लस 5 minus 8 is 5 minus 8 कितना होता है? 8 5 minus 8 is 3 स्क्वायर. तो ये आंसर आएगा. ठीक है, now to find the image, very simple, the image point it can be found at midpoint. The p plus I divided by 2 is equal to n. ठीक है,
I'm doing second. Okay, you explain, Akshat, how to do second. Second one, right? Okay. From a point P1, 2, 4, a perpendicular is drawn on the plane 2x plus 5 plus y minus 2z plus 3. Find the equation, length, and coordinates of the foot of the perpendicular. The equation of the foot of the perpendicular is pretty easy. The direction ratios are in the equation of the plane, which is 2, 1, minus 2, and we know the points, so we can find the vector equation pretty easily. It'll be x minus 2 by 2, y minus 2 by 1, and फिर से बोलो x minus x minus 1 by 2, y minus 2 by 1, and z minus 4 by minus 2. Now we can equate this to lambda and get values of x, y, and z in lambda. Put those values of lambda back into the equation of the plane and find the coordinates of the foot of the perpendicular. And then to find the length of the foot of the perpendicular, it'll be the point we found. It'll be the distance between the point we have found and point P, which has been x2 minus x1 whole square under root. Find the equation, length, and coordinates of the. ये गलत क्वेश्चन है. Foot of perpendicular एक point होता है. एक point का कोई coordinates होते हैं. इस point के equation और length नहीं होती. I think this means the equation of the perpendicular. हाँ, equation of the perpendicular होगा. The foot. अच्छा हाँ, वो question find the equation, length, coordinates of the foot of the perpendicular. चलो अभी मुझे 5